understand the code, go to the actual concept of this. अभी आप कोई प्रोजेक्ट कर पाओगे और जो कस्टमर आपको कोई अपना क्लाइंट प्रोजेक्ट देगा आप उसमें मॉडिफिकेशन कर पाओगे. You will increase the accuracy of the performance at that time. Can you see pandas.series is the inbuilt function of pandas library. It's a one-dimensional ND. ND stands for n-dimensional. It's a one-dimensional including time series, and time series what? Where we involve date, where we involve year, where we involve month, hours, seconds, nanoseconds. That's called time series data set. This one-dimensional representing for series, we will have data frame in the next code that will be called two-dimensional, right? Or more than two-dimensional. But अभी हमारे पास one-dimensional है, so I'll call it series. Can you see this data as a first variable? Every function, चाहे वो numpys में हो, चाहे वो pandas में हो, उनके कुछ inbuilt arguments होते हैं. उन arguments पे आपको उनकी values pass करानी होती है. So let's go back to the parameters here. Can you see this data? You cannot change the name, right? अगर मैं यहाँ पे देखो जैसे data की जगह data 1 दे दूँ, so can you see it's throwing an unexpected keyword argument data 1. Why so? कि सर आप तो यहाँ my data भी ले रहे हो, आप तो श्रीधर भी ले सकते हो, आप तो सचिन भी ले सकते हो, ये तो यूजर डिफाइन है. तो भाई इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में यूजर डिफाइन है, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है. The assignment operator works on bidirectional. On the right hand side we have user defined argument. In contrast, on the left hand side we have predefined arguments. What are these predefined arguments? You have all the official documents. This is the index. You can change none, but you cannot change the index. Can you see? यहाँ पर हमें error मिला. You can have D type. You can change the D type. That's a data type. You can change the name. You can change copy. You can pay fast path. If you want to go for this one, you can go for the illustration of these variable arguments, parameters, right? What is name? What is copy, right? Then you can use this one. कि by default इसका value क्या होता है? Data for output. If not specifies, this will be interrupted from data, inferred from data. डेटा की इंटरप्रिटेशन से ही ले लेगा, right? As we have seen, it's means observing entire data is integer 64 format. Once we have converted this entire dictionary or my data, what exactly my data is? My data is actually list, right? No. We have my data as list. Yes, we have my data as list. Right? So we have one-dimensional data here, right? Now in giving S2 another variable pd.series and try to convert some data is equal to my data. Within the data, I'm going to give some labels because this will be index. So I'm having labels here. Can you see what मेरे labels क्या है? A, B, C. So I'm going to assign this labels this time. So print S2, can you see पहले by default index number 012 आ रहा था, but now we are having ABC, which is our cup of tea. We have assigned labels earlier. Now we have associated or passed ये जो index यहाँ पे आपको दिख रहा है, index is equal to none. Now you have better idea what does index mean in this inbuilt function. This S2 is including both my data and values. Now I'm having S3 is equal to pd.series where we have array, right, and labels. And allow me to print this S3 at the border. Can you see? We can print S3. We can go for the array part. Right? Now S4, another format. Let's say we have series. Inside this series, I just pass entire dictionary. Can you see?
ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो जितने भी हमने ऊपर फॉर्मेट किए, चाहे वो लिस्ट था, माई डेटा एक लिस्ट था इफ यू रिकॉल, और फिर उसके बाद एरे हमारा क्या था, एक नंपाई एरे डायमेंशन था, वो उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। वी हैव डिक्शनरी देन, सो इट्स आल्सो एक्सेप्टिंग डिक्शनरी। बट डिक्शनरी के केस में आपको लेबल्स नहीं देने पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे कीज और वैल्यूज दोनों ही डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं। सो इट्स ऑटोमेटिकली segregating or making cluster out of it, which portion is labels, which portion is value itself. Sir, it's like print function, no, sir? It's behaving like print function. Which one? This pd.series, it's just like a print function. No, it's not print function. It's a data type kind of, like जैसे आपको कोई image है, so if you want to represent any image, right, so let's say we have image pixels. You can see this image pixels. If you want to represent these pixels values, right, can you see every image is form of intensity values. जैसे ये gray level का image है, so they have gray level like black to white certain range out of it, 0 to 255. So each intensity, each color intensity having respective integer number in between 0 to 255, right? If it is 0, so then it is black. If it is 255, then it is white, right? So now my code or my compiler will not go with the अब हम कंपाइलर को कैसे ये कलर बताएं कि भाई ये कलर है, तो उसको कलर तो कुछ दिख नहीं रहा है, उसको क्या दिख रहा है, ये इंटीजर नंबर्स. It's a working on integer numbers. Now you want to store this image in your memory, so you will store the entire matrix x cross y. मान लो suppose n cross n की matrix है, so you will store this entire matrix in this one. So this single column is my this one 10 20 30. Can you see, instead of 10 20 30 I'm having this pixels value there, right? अब मुझे कंपाइलर में स्टोर करना है, so I'll take help of this pd.series or pd.dataframe if you have two-dimensional data set. Did you get it now? So we are storing table or any values in the yes, variable. means like to store multi-dimensional data set, right? So this is single image. So now you understood for single image we require n cross m values, right? But what about multiple images? Suppose in video you have 100 frames. In 1 second video, आपके पास 1 second video is made up of 100 frames. Now you have 100 frames. So in pandas, you will be treating with 3-dimensional data set. So how would you store this 3-dimensional data set in your memory? How would you run the for loop? How would you run the switch condition there? आप ट्रेवर्स कैसे करोगे, आप इंडेक्सिंग कैसे दोगे हर फ्रेम्स को? Can you visualize this part, what I'm trying to explain? Yes, sir. Yes. I mean, if I'm not clear, I can explain in either words also. Okay, through series we will store this one. Yes. Multi-dimensional table. Multi-dimensional, right? So in this case, list is not list is restricted there. We have some dimension. Now we have to multiple dimensions. Okay. So let me explain data frame. So I think you will be more clear picture. You will have more clear. So I'm having matrix data set. So for this, I'm using np.random.rand int. So I'll explain what is rand int here. So then 1, 20, size is equal to 20, and then going to reshape to 5, 4, and then let's see .v, this one. Can you see
Okay, let me print this value first. Let's say I'm having C, B. So with this matrix is equal to this one. Now I'm going to print matrix. Can you see? It's giving single dimension data. So what's the responsibility of this rend? Rend int. So rend int giving random integer in certain range. What is the size in certain range means here I'm giving the minimum and maximum value. And what is the count of this? This is given by size. Let me give this as a, let's say 5 only. So can you give run? Can I give matrix? Can you see? I'm getting only 5 elements here. So this function provides this size, these number of elements within the range. Can you see? ये जो value है वो 1 से 20 के बीच में है. In case I'm giving only 1 to 6. So I'm going to run this code again. Can you see? All the values are in between 1 to 6 or 1 to 5. Second value is excluded. In case I'm giving the starting from 5 till P11, so I'm having 5 to 10. Can you see? All the values are in between 5 to 10. Or I'm giving size is equal to 10. I'm generating 10 values in between 5 to 10. This is the roles of this render. .int, rend int, right? Now we know couple of things with respect to given number. We have size number, right? So इसने क्या किया? 20 numbers को generate कर दिया in a series. This is entire series, and this is nothing but this pixel value, right? ये जो pixel value का random numbers है. If you ask me to allow give one, okay, I can give this pixel value also in between 126. Give me some this value. Can you see? Now I'm having exact almost same pixel values as I had taken from the Google Sheet. अगर ये सिंगल कॉलम को आप मैच करो तो ये जो नंबर्स हैं ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं मेरे रैंडम जनरेटेड नंबर से. Can you see this one? Yeah. Sir, does anything like it will not include a maximum one? Any chance? Because I noticed that the maximum one not included. Maximum one means this one? Yes. Yes, I also stated that second part is not included there. 1 to 19. Yes. Okay. Right? We won't find the second number anywhere. So I'm giving small numbers here in between 1 to 10, and we are going to reshape. Can you find this reshape here? जो यहाँ पर, okay, so what's this shape of this number? ये जो number है, ये है 1 cross 20 का. 1 row, 20 columns. This is how compiler reads. Now आपने बोला कि यहाँ पर जो है ये जो पिक्सल्स हैं ये 10 क्रॉस 15 की है या 10 क्रॉस 10 की है. अब ये कहाँ से आता है? ये आता है अगर आप इमेज की क्या बोलते हैं आप उसको, हाँ ये पिक्सल्स, ये आपने देखा ना डायमेंशन, इमेज डायमेंशन, पिक्सल डायमेंशंस जो होती हैं जो आपके मोबाइल में भी होती हैं या आप अपने कैमरे में भी सेट करते हो. तो कैन यू सी दीज आर दी इमेज साइजेस जो आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स रोज वर्सेस कॉलम है. Right? Can you see this third column? The PPI, pixels per inch. That is the dimension. अब तो हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पे हमारा 4K वीडियो जनरेट होते हैं. आईफोन में तो और एक वीडियो 1 GB का होता है. If you have iPhone or Apple system. So that's they are talking about last 2 rows. So that's the point here. Suppose I need I generated 1 to 200 points here. All right. So in between, let's say 167 till 255, I generated
let's say 200 values, right? And इस ये एक single dimension value है. Now I am going to reshape it with the, let's see, with the 10 cross 20. Of course, जो multiplication है वो 200 के multiplication में आना चाहिए. This value should be equivalent to this number, right? So if I'm going to print this number, can you see we have more brackets here, more brackets. So what they are representing? They are representing the original image here. And this is how single image is stored in the memory in the format of data frame. Can you see? Let's see. Shape plus 4. Going to run this code. Now we have smaller 5 process, 5 rows, 4 column. If you just focus at this point, right? Now I'm having row labels. This row labels would be equivalent to this one A, then we have B, then we have C, then we have D, right? How many rows we have? We have 5. So we will have one more value, that is E. Till E we have, right? So we will have columns headings also. So with this column headings, I'm going to create, let's say, the row 1 or the column 1. Let's see, B, B. How many columns do I have? 4. So I'll take 4 copy here. 4, 3, 2. Right? So what's my objective here? I'm going to define BF is equal to PD dot data frame. It should include the data is equivalent to matrix data which we generated here. I'm going to pass the data set, and what should be the index as we have. So we have row underscore labels, and within the I'm going to assign columns is equal to column heading. Copy this one and assign column names, right? Global labels is not defined. Okay, so label, right? So if I'm going to run this DF, can you see this is the actual data set here. So the data frame look like column 1, column 2, column 3, column 4, and respective values are here. Can you see this one? If we have BF 3 is equal to Sir, for pandas we have different functions and numpy having a different function, no sir? yes. They both have different areas. अब आप उसके देखो उनका site ही अलग है. If you go for the numpys, so we have numpy official website itself dedicated, numpy.org. Similarly, we have TensorFlow, we have Keras. So ये different organizations, the consortiums ही different है. Can you see? We have NumPy username, NumPy numerical Python, open source Python library, and so on. Okay, anyone else who had the question?
Sir, actually, what is the difference between NumPy and pandas? Okay, good question. NumPy is made up of mathematical calculations, right? जैसे कि आपको कोई integration, differentiation, exponential part, right? Or you need to give some suppose I'm having sigmoid function. Let me give right sigmoid function we will using in India. Can you see Sx is equal to 1 upon e raised to power x, right? So suppose you want to create this graph and this calculation, the neural network and all, right? Can you see this graph below function, right? So this graph is responsibility, or how would you create this graph where we have dependent and independent variables both. Fx is dependent variable and x, c1, c2 are independent variables. So we need to create this graph, right? और different values के लिए ये graph create होके आए और ये graph बन जाए. So we will take help of NumPy. Now, what is role of pandas? So pandas जो है वो हमारे पास में different डेटा फ्रेम, जब कभी भी आपका CSV में डेटा सेट होता है, राइट? लेट मी ओपन माय शीट. सो इनसाइड माय शीट आई एम हैविंग सो मेनी, आई हैड ऑलरेडी अपलोडेड सो मेनी CSV files for your practice. If you scroll down, you will find June 5. I had already uploaded CSV file, right? If you ask me to open customer purchase.csv, so I'll have to deal with gender review, और आप बोलोगे कि सर ऐसा फिल्टर करके दीजिए कि जिसमें परचेज यस हो, right? I need only rows those are having purchase is equal to yes, or I need gender is equal to female, or I need education is equal to UG, or I need age greater than 75. So this kind of data processing is done by pandas itself. Did you get the idea? Yes, sir. और इसके अलावा सपोज कुछ फंक्शंस कॉमन है इन दोनों में, जैसे कि स्टैटिस्टिक. जैसे स्टैटिस्टिक क्या, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस एज, we will go, but at least you have heard this term earlier. आपके स्कूल में भी 10th स्टैंडर्ड से ये टर्म स्टार्ट हो जाता है, but most of us do not know what is the exact meaning of this standard deviation. How statistics are correlated with the pandas, with the data frame, with the deep learning and so. But for your ground truth idea, statistic अगर आपको इस कॉलम को पता लगाना है, then you require pandas function. आपको इसका आपको मान लीजिए मीन पता लगाना है, और आपको इसका पॉइसन रेशियो पता लगाना है, टी टेस्ट, जी टेस्ट, chi-square test, multiple values are there in the Python. How would you treat these tables? We will go with pandas first, right? So multiple tables को जब treat करना हो तब हमारे पास में pandas operation आता है. ये सेम काम के लिए तो SQL भी होती है, पर क्या CSV डेटा के लिए है pandas है? एक ये सेम काम के लिए एक्सेल है. हाँ, देन मतलब जिस तरह के डेटा हम फेच कर रहे थे कि अगर एज हो या कुछ भी हो, तो हम सिक्वल से भी यही करते हैं जनरली डीबी पे जब क्वेरी चलाते हैं. ठीक है. तो मेरा क्वेश्चन है कि वहां भी ये हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, तो pandas और उसमें ये डिफरेंट किया, तो pandas मेनली ऑन CSV डेटा पे कंडीशंस था फेच करने के लिए, ऐसा कुछ. See, what happens, सबका पर्पस सेम है, but when we talk about compatibility, what do I mean by compatibility? Or the one more thing is there, query time, right? So क्वेरी टाइम का मतलब ये है कि आपने गूगल पे सिग्मॉइड फंक्शन सर्च किया और आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कितने सेकंड में, 0.33 सेकंड, राइट? हम पलक भी नहीं छपका पाए तब तक इसने इतने सारे वेबसाइट से ऑपरेशन दे दिया. अब कंपनी क्या ढूंढती है, कंपनी ढूंढती है कौन सी
लैंग्वेज सबसे कम आउटपुट में सबसे कम रिस्पॉन्स टाइम में मुझे आउटपुट दे देगी. This Python library is very good for prediction, for machine learning operations, for deep learning operation. क्या SQL इमेज डेटा के ऊपर काम कर सकता है? आई थिंक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हो रहा है ना. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता. Anyone else? I need more responses from the team. Do we have any solution? और कोई बता सकता है कि हम SQL में इमेज के ऊपर वर्क कर सकते हैं या नहीं? The answer is yes. हम SQL के ऊपर वर्क कर सकते हैं. We can perform multiple operations, storing images, fetching the query in SQL also. But बात होती है कि वो इतना टाइम लेता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो पेड है, ठीक है. दूसरा क्या है, उसमें टाइम बहुत लगता है कि वो टाइम आपको बहुत वेबसाइट पे फेच करने में और इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने में. हो सकता है आने वाले टाइम में कोई ऐसी लैंग्वेज जनरेट हो जाए जो इससे भी कम टाइम दे, पाइथन से भी कम टाइम दे. इंडस्ट्री उस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेगी, पाइथन को छोड़ देगी. मार्क माय वर्ड्स, पाइथन मार्केट से बिल्कुल गायब हो जाएगा, जैसे आज की डेट में जावा ऑलमोस्ट वैनिश होता जा रहा है. HTML का अब नाम सुनने में नहीं आता है, कोई आपको HTML डेवलपर ही नहीं मिलेगा, राइट? सो सिमिलरली बहुत जल्दी डिकेड्स भी नहीं लगते हैं कोई भी लैंग्वेज को मार्केट से गायब होने में. जैसा कि आप देखो विजुअल .NET आज की डेट में मार्केट में डेवलपर ही नहीं है, .NET के बहुत कम है, सब चले गए, जनरेशन ही खत्म हो गई वो .NET वाली. अब आपको पाइथन डेवलपर मिलेंगे, बूटस्ट्रैप मिलेंगे, Node.js वाले डेवलपर मिलेंगे, राइट? So what I'm trying to do, the last option, bf.to_csv and giving some name. Let me give sample_data.csv and hit run. If you will find my local machine, last modified. Can you see sample data.csv? इसको मैंने क्लिक किया और डाउनलोड किया in my local machine, my Excel sheet also. This data is available there. जो मैंने अभी क्रिएट किया रैंडम इंटीजर से पाइथन के थ्रू, वो मेरा अवेलेबल है वेबसाइट पे ट्रैवर्स करने के लिए. आई कैन थ्रू दिस डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. अभी हम क्या है, अभी हम टच स्क्रीन पे हैं, अभी हम ऐप की दुनिया में है. ऐप पे हमें तुरंत ऐप पे डेटा चाहिए, हमें सोशल मीडिया पे तुरंत डेटा चाहिए. तो आप उतना फेचिंग टाइम कहाँ से लाओगे, आप उतना प्रोसेसिंग रिस्पॉन्स टाइम कैसे घटाओगे? सो वी हैव पाइथन एज एन गुड ऑप्शन, राइट? कि ये एसक्यूएल की क्वेरी को अब ये एसक्यूएल की क्वेरी भी नहीं है, अभी ये एक्चुअली क्या है, अभी आपको क्लाउड पे लेके जाना है. अब आप भूल जाओ कि अभी एक्सेल शीट, जब आप कंपनी में जाओगे तो ऐसे आपको काम करना पड़ेगा. यू विल हैव टू राइट ऑल दीज कोड्स इन क्लाउड, जहाँ पे MLOps का एनवायरनमेंट है, जहाँ पे पाइथन का जुपिटर उन्होंने एक एनवायरनमेंट के जैसे दे रखा है. You will find same Jupyter environment Anaconda inside the AWS, inside the Azure, inside the GCP or Alibaba, right? I can deploy df.to_csv and sample.csv here, and I'll have this entire CSV file in my local machine, right? Okay, so do we have any doubt? So I'm going to sum up this meeting here.